Hi everyone, welcome to UPSC Tree. So Geography paper 2 UPSC Mains recently conduct करथिले and aspirants have been talking about कि जहाँ जहाँ expect थिला सही हिसाब रे क्वेश्चन आसी नथिला. That means कि the things that usually students expected सही क्वेश्चन आसी नथिला. Does it mean कि UPSC has done a surgical strike on aspirants? So in this video we'll do an analysis, we'll look at the questions and we'll look at कि are they targeting geography as an optional or not. Okay, so let's begin. अच्छा, let's look at section A. Section A जदि mapping देखिबो, you have पासीघाट, you have देखो total 12टा अच्छी, 12टा रु 10टा करियो पड़िबो. So 10टा करि हबो कि नै, let's look at them. पासीघाट, everybody who has done little bit of decent study of geography पासीघाट करि परिबे, संबर लेक करि परिबे, मैसूरडेम करि परिबे, इंटरव्यू आइलैंड, दूधसागर फॉल्स, महाबलेश्वर. 6 1 2 3 4 5 6 इज वेरी इजी करि परिबे आराम रे. आउ जो माने कोरापुट साइड के सदर्न ओडिशा पिला से माने एटा जानिथिबे जलापुर डैम एंड ऑल करि परिबे. कुलडीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बालेश्वर पिला करि परिबे. बट अगेन ए दिटा ओडिशा मैपिंग थिला एंड ओडिशा जदि लिटिल बिट ज्योग्राफी पढ़िथिबो करि परिबो. जलापुर डैम मे बी यू नॉट नो, कुलडीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रीटी वेल नोन, तो सेटा करि परिबो. माने 17 आइगला 17 करि परिबे. And then apart from that, Talakaveri you can take a guess कि it is somewhat related to Kaveri, so somewhere around that you can do. So जदि 10टा क्वेश्चन देखिबो at least 7टा करि हबो आराम रे. That means you can secure out of 60 you can secure 36 to 40 mark easily. So it is a if you look at say अन्य कोनोसी ऑप्शनल जदि देखिबो तुमको 60 मार्क क्वेश्चन लिखियो को पड़े पूरा. एठी जस्ट you are doing mapping and writing few points about them, 3 points maximum about them. So बहुत ही easily you can square 40 marks. So it is not a surgical strike at all. Mapping गोटे दिटा difficult थिला, that's fine, that is the part and parcel of it. And 60 रु 60 रखिबा भी कष्ट. जदि अन्य ऑप्शनल पिला को देखिबो से 60 रु 60 के 60 रखि परिबानी और 60 to 60 रखि परिबानी के. So obviously we can expect कि 40 mark easily 10 minutes भितर सार दबो एतिके and 40 marks is in your hand. So it's not a bad thing, it's a good thing. Now going back to the questions, बहुत गुड़ा पिला एक्सपेक्ट करथिले कि आमे भी देइथिलु कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, द टिपिकल PIQ जोड़ा माने एक्सपेक्ट थिला फ्रॉम UPSC, दे डिडंट आस्क दोज क्वेश्चंस एट ऑल. ओके, एथर जदि देखिबो दे हैव आस्क्ड अबाउट कि टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर डेंजरस, लाइक ए एसे essay. So it is flood and drought actually. Flood and drought देखेबो, drought region of India देखेबो. India if you look at it 68% of India is drought. And कौन पाई देखेबो drought कौन पाई होची वेस्टर्न घाट देखेगी, that part देखेबो कि वेस्टर्न घाट रो रेन शैडो रीजन रे drought रहउची. साउथ वेस्ट मॉनसून एठी ठीक देखेबो how it comes and all that. Okay, so वेस्टर्न घाट रो रेन शैडो रीजन देखेबो. Aravali alignment देखेबो कि why the Aravali is not a barrier to the southwest monsoon, सेथिमे राजस्थान is a desert region सेटा देखेबो. So यही aspect गुड़ा देखेबो कि wherever there is drought, why there is drought and all that. Okay, so too little water, and again too little water रे खाली drought देखे कि don't stop there. If you go to say Ladakh region, there is also scarcity of water. In fact we have a Iceman of India, Chewang Norfel करके, ठीक है. सो what he has done or built artificial lakes. So सेठी भी वाटर स्कैरसिटी हुए बिकॉज ग्लाशियर मेल्ट है कि टाइम बाय द टाइम द वाटर रीचेस द विलेजेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, लॉट ऑफ टाइम. सो दैट्स वाई से आस्पेक्ट भी लिखिपर कि टू लिटिल वाटर बिकॉज लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट आज वेल. सो से आस्पेक्ट भी लिखिपर. टू मच वाटर एटा कोठी लिखिपर. टू मच ऑफ वाटर रे तमे दे परिबो, फ्लड जोठी होची तो दे परिबो. अपार्ट फ्रॉम दैट if you look at say Mysunrem यही सब पार्ट गुड़ा too much of water माने too much of rainfall etc. जदि हला से पर्टिकुलर एरिया रो न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल विल बी कंप्लीटली गॉन. ओके, मेघालय रीजन जो देखिबो, ओके, जोटी अत्यधिक वर्षा होची. सो दोज एस्पेक्ट्स यू कैन टॉक. सो इजीली करी हबो, एमति न कि करी हबनी. एंड सुइटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया मेघालय दबो, बहुत गुड़ा एग्जांपल दे परिबो. लातूर महाराष्ट्र रो विदर्भ रीजन, लातूर एटसेट्रा. सो मेनी गुड एग्जांपल्स कैन बी गिवन. ओके, so pretty doable and मत जदि पचार these are a better questions than the typical ones. Okay, भलो मार्क रखी हम. Describe the second next question, describe the implication of using higher doses of fertilizers
on environment and human health taking any Indian state benefited under green revolution. See, मैंने indirectly पचार कि green revolution what is it लिखिबो and its ramifications which particular states have badly impacted by the green revolution. That means they have benefited out of it, and in turn there was some ecological damage, ecological and damage to the human health. ये aspect गुड़ा देखिए पड़िबो. So Punjab region soil fertility loss etc. ये सब जिनसे गुड़ा देखिए पड़िबो. Easy question, can be done very easily. Give an account of the influence of topography on the development of rail transport in India. Discuss. Topography and rail transport. We know that transport will happen when there is topographic advantage is there. But much of India, जेहेतु और say majority part of India, for example North East India आएगला, हमारे Central India आएगला, जोड़ जी topography is difficult. It is very difficult to build railway system over there. So it is what you have to show geographical perspective is you have to show the map of India and which part of India we don't have much railway penetration and why, what is the geographical barrier around it, why we are unable to build railways around it. Despite the fact that there is geographical barriers or physical geographical barriers, still we have done a lot of railway in places where it was not feasible. Okay, I would example देवी. Best example होची Konkan railway. If you look at Konkan, it is running through the Western Ghat. Western Ghat is a very ecologically sensitive area, and Konkan railway ro history जदि पढ़िबो, George Fernandez was associated with it, and it was a very much he was the railway minister at that point of time, if I remember well. So बहुत गुड़ाए इश्यू होता किसी लोक मरी जाते बिकज जेहेतु इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन. सो व्हेन दे आर डिगिंग अप दैट लैंडस्लाइड ये सब है बहुत गुड़ाए लोक भी मरी जाते. सो दिस एस्पेक्ट्स कि हाउ इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड ए रेलवे सिस्टम इन दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव एरिया और टेरेन एंड हाउ टोपोग्राफी पोजेस ए चैलेंज. गोटे एक्सेलेंट केस स्टडी होची कोंकण रेलवे सिस्टम. से जदि जानिचे लिखिपर ना लिखिपर. दैट मीन्स you should not stop your answers or stop learning or stop exploring the new things. ठीक है, just about if you are going about say being bookish और खाली जदि PAQ कर चलचो, then you are going to suffer. That is for sure. That is what OPSC is trying to put you through, saying that ki if you are going only the way you are going, that means just तीन चार्टा PAQ भलसे घोषिकी चलीगल एंड लिखिदेल आंसर. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर. ओके, मूविंग ऑन. सेक्शन बी जो देखो प्रिटी इजी क्वेश्चन 20 मार्क चारिटा देइछन तीनटा करिया पड़िबो. कलापानी बाउंड्री डिस्प्यूट इजिली स्टबल बर्निंग इन इंडिया नॉर्थ इन इंडिया पंजाब हरियाणा स्टबल बर्निंग होचे. दिल्ली इज जोग्राफिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तले अच्छे. सो स्टबल बर्निंग जो स्मोकटा आसूची पंजाब हरियाणा इट इज नॉट गोइंग अप बिकज ऊपर हाई प्रेशर अच्छी. सो इट इज पुशिंग द विंड डाउन. That is the reason why wherever the smoke is there, it is around the human being. The pollution is unable to dissipate into the upper atmosphere. So that is a major issue why Delhi suffers from high degree of air pollution as well as congestion. Okay, air congestion. Distinguish between Bhubaneswar and Chandigarh. एटा मु स्टूडेंट्स मान को यूजुअली क्लासरूम रे इन पासिंग रेफरेंस रे कहि दिए कि Bhubaneswar was created by a German whose name was Otto, and he believed that कि culture should be part and parcel of our life, and that's why we see in whenever he built Bhubaneswar, he integrated the Odisha culture into the buildings and all that. But if you look at Chandigarh, it is built by a French architect. His name is Le Corbusier, and he was being a coming from French, he was obviously he didn't want the cultural elements to be part of the architecture. That means he wanted secular architecture. That's why if you the things that he has built in Chandigarh does not show the cultural heritage of Punjab or Chandigarh region at all. Okay, so yes, सही aspect गुड़ा लिखी परिबो. Increasing aging population of India, obviously it a futuristic demography रो लिखी हबो. Moving on. Easy get भी difficult किसी भी difficult नुहे. Concept of COVID-19 led reverse migration and its impact on rural area with special reference to Odisha. देखो जो इम्पैक्ट पचार कोविड-19 टाइम रे रिवर्स माइग्रेशन होता लास्ट टाइम मुझे क्वेश्चन भी देते. सो इम्पैक्ट ऑन रूरल एरिया व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड. जदि पॉलिटिकली इश्यू देखिबो मच ऑफ द पंचायत राज वर इन्वॉल्वड इन इट मैनेजिंग द माइग्रेंट्स एंड को टाइप रो माइग्रेंट्स आसुले रूरल एरिया को. मोस्टली दे वर ब्लू
कलर वर्कर से आस्पेक्ट देखिए आउ से आसुले बट दे कुड नॉट गो टू द विलेजेस दे हैव टू स्टे इन ए क्वारंटाइन सेंटर आ क्वारंटाइन सेंटर रे बहुत गुड़ा इश्यू इमर्ज होता से टाइम रे सेटा देखि पारिबो ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस कोविड-19 रिवर्स रिवर्स माइग्रेशन जते बेला तांकर रोलटा एग्जाम्पलरी थिला सेटा भी देखैबो ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा एठी आउ कोन देखै पारिबो से फॉर एग्जांपल कोविड-19 हैज ब्रॉट बैक अनटचेबिलिटी इन सोशल आस्पेक्ट वी नो दैट किंतु तार गोटे डीपर आस्पेक्ट गोटे बहुत डेवलप है कि रूरल एरिया रे काहू जदि कोविड हो जाइथिला ताकू पूरा रूरल रे आइसोलेशन कर दउथले पूरा जेमति आगुरु अनटचेबिलिटी कांसेप्ट थिला सो अनटचेबिलिटी केम इनटू वी नो दैट सोशल आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड इन कोविड-19 एंड ऑल बट ताकू पूरा रूरल ऑस्ट्रासाइजेशन कर दउथले पूरा कास्ट अवे कर दउथले पूरा सोसाइटी रो आउ जहाँ को भी जहाँ घरे भी कोविड हो जाउथला दे हैड टू फेस social humiliation, political humiliation and all other humiliations that meted out to them. So सेथि पई बहुत गुडा इश्यू भी इमर्ज हेतिला people have started fighting with each other से गुडा एस्पेक्ट गुडा लिखि परिबो. अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल एरिया रे जेहेतु नॉलेज कोविड-19 टाइम रे बहुत गुडा मिस इनफॉरमेशन जाइथिला. फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू कि आंध्र प्रदेश रे जने स्मॉल विलेज वाज देयर 100+ population were there. They used to follow a TikTok and all that. That point of time TikTok was not banned and गोटे से फॉलो का करते बोध हुए and that lady advocated that कि तुम जब दत्तुरा रस पीदेव then कोविड-19 हेनी. Then the whole village drank दत्तुरा रस and all of them were hospitalized. So this kind of misinformation is very high in the rural area. Rural area रे vaccination पाई they had a fear and all that. So गोटे reluctance थिला से माने को convince करिबा, bringing them out of their homes and helping them. So it was extremely difficult because rural area रे another major factor is illiteracy, but everyone has a phone, so they are getting their news not from the formal sources but from the informal sources, Facebook, WhatsApp, esubru news. So misinformation flew like anything. Okay, so rumors, misinformation जो बहुत गुड़ाए लाइफ लॉस भी होती, किसी लोग सैनिटाइजर पी देते, किसी लोग ये सो बहुत टाइप जिनस होती. सो दोज काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव हियर. एंड ओडिशा जेहेतु बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया, ओडिशा रे रूरल एरिया केते अच्छे देखैदेव 85% अराउंड अच्छे आमर रूरल एरिया. सो इट वाज ए वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. ओके, सो द ऑफिसर्स हु आर एंगेज्ड इन इट दे हैड टू अडॉप्ट डे इन डे आउट. ओके, सो से एस्पेक्ट गुड़ा लिखिपार. What are the salient features of slums? Analyze the growth of million cities in India in the last 2 decades. It is typical problems of urbanization. Typical question. Okay, easily likhi habo. Okay, moving on. Okay, I think this is the last question. Discuss the concept of integrated watershed management. Integrated watershed management कौन देखे दबो? Usually कौन पाई हुए कौन नहीं. Critically examine the government initiative for development of backward area in India. ये जो backward area अच्छी, which portions of India is backward? For example देखो, desert area is backward, drought prone area is backward. Area देखिबो, it is invariably means a deserted area or semi desert area and hilly area or plateau area. Okay, so hilly area, plateau area, tribal area, hilly area, plateau area mostly inhabited by the tribals. So say aspect गुड़ा देखी परियो. That means we can what we can do कि drought area management, hill area management, tribal area management सब गुड़ा aspect. Backward area माने you discuss about all the aspects of it. Okay, को area रे backward area अच्छी कौन पाए अच्छी and what kind of backward area it is. So say aspect गुड़ा देखे कि आराम रे 60 मार्क पर क्वेश्चन लिखी परियो. So in my opinion there was no surgical strike or anything. These were very good questions. The thing is what students expected कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नोशन होगा कि ना फिजियोग्राफी होगा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ इंडिया. बट से क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए लिखापी. ये क्वेश्चन पढ़ले इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट लिखिपर एंड यू विल बी हैप्पी कि अच्छा ये जिन लिखिली. So PAQ are not going to work anymore. They are trying to improvise. They are trying to ask students those things that they have accumulated. So in this kind of questions, what you have learned over the years is going to come to your rescue. Okay, so it's not that कि 20 दिन पढ़ी पढ़े भी आउ टॉपर हो से चांस गला आउ से भाया हबार भी ना. Okay, so change your methods. That is my only suggestion. There was no surgical strike. Geography paper relatively बहुत ही easy थिला. If you ask me, बहुत ही easy थिला and pretty doable, and I am pretty sure geography students will score very good marks in it. Okay, so thank you, and if you have any doubts or anything, let me know.